Okay, we are live. Yes. Okay. Okay, sir, today I've got for NM Bombay and can I suggest which one to choose? यार चूज वाली बातें बाद में करेंगे. Good problems to have. Great. कौन सी कॉल से चलो एक बार टाइप करो प्लीज. कौन सी है? You got NM call. What else calls you have? NM तो कन्वर्ट है तुम्हारा भाई. Super congrats once again. ठीक है. NM सारी लिखो एक लाइन में. कैप है, SIBM है, पुणे है, IIM कोईकोट, शिलोंग, MD गुड़गांव. ऑलराइट, और बताइए. NM बेस्ट कॉल है सर. कन्वर्ट भी हो गया. क्या बात है. Congrats man. Congrats. MD गुड़गांव, SPJain, IIM कोईकोट, MD SPJain, शिलोंग, MD गुड़गांव, MD XAT MDI. ये NM का सेशन लग नहीं रहा है भाई. क्या हो रहा है ये? ठीक है. ठीक है. और ओनली NM वाले कौन है? जिन लोगों का ओनली NM कन्वर्ट है भाई. ओके, ग्रेट. ओनली NM SPJain, SPJain, MD गुड़गांव. सुपर. आई थिंक हम तुम्हारे पास ओनली NM वाली काफी जनता है. ओनली NM मतलब बेस्ट जिसका NM कॉल है. NM इंदौर और एक्सेल कन्वर्ट है. गुड यार, गुड. क्या हुआ? चलिए ठीक है भाई. Super congrats once again, boys and girls. And before we get the party started, पहली बात तो भाई, hope CATKing was helpful in your journey. Very much. Very much. पक्का? Yes. बहुत पक्का sir. NMAT से लेके interview तक everything. Very helpful sir. Good. Unmute करके बोल सकते हो भाई. मैं live भी कर रहा हूँ. बताओ भाई. अब तुम स्टार हो चुके हो यार. सर SOP बनाने से लेके इंटरव्यू तक सब में हेल्प किया सर. So the 1 hour classes at 10 o'clock was very useful, and Sunday classes by Anisha ma'am was really helpful. Good. Pretty much all the classes they were input. Everything was helpful. Especially sir the mock interview conducted by Aditya sir. उन्होंने जो stress interview लिया बहुत help किया उसने. कुछ help नहीं. वो भी मार रहा है तुम्हारा आईडी, तुम्हारा senior. Adi, you are a rock star man. Thanks for helping these people. Great. No problem. So it was a pleasure seeing so many of them on the other side. Like I can personally recall a lot of names: Roshan, Nandini, Aditi, like a lot of them that I personally taken some mock interview of, review their SOP. So it's actually, a lot of them even called me up the moment the results came up, and they're like, Adi sir, Adi Bhaiya, Aditya, whatever. We converted them. So it feels good to see a lot of them on the other side. आदि सर को तो मैंने बहुत तकलीफ दिया इतना मैसेज करके मैंने. Super sir. Great. अच्छा, quick feedback. How was the CATKing NMAT mocks और जो पुराने टर्बो इंटेंसिव वाले कोई है यहाँ पे? टर्बो इंटेंसिव टाइप करो भाई एक बार. अब तो तुमने साइकिल कंप्लीट कर लिया. अब तो तुम MBA पक्का कर रहे हो. ये कंफर्म हो चुका है. कोई है इंटेंसिव सोमैन इंटेंसिव. तो तू मेहनती आदमी तेरे को मिला. आराधना इंटेंसिव. ऑलराइट. ओके, ग्रेट. Super congrats यार. Great. How was the mocks and everything? They were helpful? All right, great. Mocks और CTP, great. Go great. 18 मॉक दिए NM के लिए कि CAT के लिए? NM के लिए 18 मॉक दे दिए. क्या बात है. सुपर यार, सुपर. ओके, ग्रेट. चलो भाई ठीक है. 2-3 बातें करते हैं. Any more questions you guys have? Then we gonna अभी तुम रोल मॉडल हो, थोड़ा ज्ञान देना है अगले साल के बच्चों को भी और एक लाइन देना. बिल्डिंग इंटरव्यू आंसर तो डैशबोर्ड वाज हेल्पफुल. ऑलराइट, गुड. So बोल. Sir, work XAT का मेरे को issue हो रहा है because even if I resign tomorrow, they will not give the certification and all very soon. So what can I do for work XAT? If you resign tomorrow, they'll not. कितना work XAT तेरा? Sir, मेरा 2.1 लगा लो. 2 साल पूरा है. भी 1 month चल रहा है. 2 साल में इतनी तूने टाइम पास नहीं किया अपने मैनेजर के साथ कि तेरे को एक्सपीरियंस लेटर देगा वो? सर वो HR अब थोड़ा ढीला है हमारा, उसके साथ बनती नहीं है. बना के रखो भाई. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. बट हाँ, यू कैन जितना है वो अपलोड करो. बाकी बाद में भी कर सकते हैं. राइट आदित्य? बाकी सर्टिफिकेशन बाद में भी कर सकते हैं. Hello sir. Hi sir. Good evening sir. हाँ, बोलो. So I remember that even my manager did not, so I worked at मेरे को in meeting डैडी वॉइस ट्रैक हो रहा है. email. So Sir, Aditya, your voice is breaking. So I'll take that up. So guys, if you don't have, let's say, your WorkX letter or your completion certificate, even a lot of freshers will not have your degree or last sem ka mark sheets. It's all right. Please submit the documents till the latest which you have. Upload on the system. Don't miss the deadline because there will be no extension on that. If it is 20th, it has to be 20th. If it is 21st, like it's given 21st this year, so make sure 21st you submit it. Okay.
And the rest of the documents you can submit and add on later as well. चलो बढ़िया Ma'am, what's the final date for submitting the documents? Because usually my last semester finishes in the month of July and the results will come around September. So they allow I you, guess- it will depend on year, but till our year, it was allowed till September end. So they'll give you timelines based on your university results, because since COVID, all the exams timelines and everything has been delayed. So college will give you that. Yeah, you've got admission, you have paid them their fees. They will help you to make sure all their documents and everything is submitted and you continue your journey inside the college. मैम ये कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ था, तो मैंने उसके बिना ही सबमिट कर दिया फॉर्म, क्योंकि वो बोले अभी तो नहीं है, तो बाद में कर सकते हैं ना वो. Whatever you all don't have right now, upload it later on. They will come back to you and ask all documents. Actually, I've called the NMIMS guy, and they said that we can upload the documents by 30th September. Great. So you already have your deadlines, right? It's again 30th September. So it's absolutely fine. And rest of the things also case by cases they'll give you. Don't worry about those aspects. Okay. Just a quick check for everybody. Is Anant, are you connected? Yes, ma'am, I am. Lovely. So guys, all congratulations for you all for making it to NMIMS. To get some more insights about the journey and what is ahead, we have Anant, and I think he should introduce himself. He's a super senior out here for all of you. Hi guys, good evening. First of all, so that is what being thrown under the bus feels like. I just joined the call and here ma'am told me to speak. So, ma'am, I am sorry, I actually missed out. You did mention on the group saying we were supposed to guess, and then you've not told us the number. So our countdown for total converts is still going on. Yes, that's something which we all bet on every year. And let's hope for everybody's to give in their updates. As of now, we are at 200. Woo! That's really big. Big applause for you guys. Why 200 नार्थी मंजी कन्वर्ट है CATKing फैमिली की, पता है 200. It's too good to be true. वो तुम में से कितने अंदर जाएंगे, but congratulations, you worked hard and thank you for standing by and listening to all of those folks as well. तो भाई तुम्हारी मेहनत है and super congrats once again. ठीक है भाई, done. एक दो और सवाल, कुछ और सवाल किसी के? Sir, I have a question. Good evening, sir. My name is Shashwat. हाँ. Sir, I just asked the question. Sir, actually, I've got an offer from IIM for their 1-year program. And also I have a converts from, calls from MBI Gurgaon and SPJain. So, sir, may I know which one should I choose of this? IIM कोई कोड convert अभी आ गया है? Yes, sir. उसका admit आ गया है, sir. वो 1 year का जो full time program है. BM program, BM है ना उसका नाम कुछ? BM क्या है? Sir, BL है. BL program. Yeah. I met some people there. They're pretty happy with the same. और दूसरी कॉल क्या है? MD गुड़गांव. Sir, MBI Gurgaon, मैंने बॉम्बे से आज convert किया. अरे वाह, ठीक है. रुक जाओ, अभी MD गुड़गांव भी है, SPJain बॉम्बे भी है. रुक जाओ थोड़ा अभी. But फीस तो देना पड़ेगा भाई. भाई सर, इसलिए मैं थोड़ा सा जाना था सर. वो आपका एडवाइस दी सर, मैंने मेल भी किया था आपको. तो सर आपका रिव्यू मेरे पास नहीं आया. तो सर मतलब मैं MBI गुड़गांव के ऊपर इसको चूज कर सकता हूँ क्या? MD गुड़गांव के ऊपर NM को? नहीं सर, IIM कोड के 1 year प्रोग्राम को. अच्छा. मेरा वर्क एक्स 3.5 years का है. टफ कॉल है, ठीक है, थोड़ा वेट करते हो. अपन विल टॉक सेग्रीगेट पर्सनली ऑन दैट, ठीक है, आराम से. ओके सर, आपको मैं बढ़िया सवाल है. हाँ बोलिए. I wanted to know more about the HR program because I've got selection for both, and I have a passive interest in HR as well, so I wanted to compare these programs in terms of. Anybody who has any question? एक मिनट पहले तो अपने कैमरा ऑन करो भाई. अब तुम बड़े आदमी बन चुके हो और शक्लें मुझे भी तो देखने दो एक बार. कभी सड़क पे मिलेंगे तो तुम पहचान लोगे, मैं तो पहचान नहीं पाऊंगा. एवरीवन ना फटाफट कैमरा ऑन है और थोड़ा सा ज्ञान देना है YouTube लाइव को भी, और YouTube लाइव भी शुरू कर रहे हैं. ओके, उत्सव का भी कॉल आया. कांग्रेट्स. ओके, नाउ आई कैन सी एवरीवन. अरे क्या बात है. अरिंदम मुखर्जी तो एकदम स्टोन लग रहा है भाई. क्या सीन है भाई मुखर्जी साहब? Sir, I have one question. Can I ask? Go ahead. Sir, actually, right now I'm working direct, so I cleared NMIMS Mumbai previous year, but I was waiting for a second Pune, so I didn't join that. Yes, this year I cleared that, but I just wanted to know that is it right in terms of ROI? If I join NMIMS leaving Deloitte, so will it be
fine for me in the future in terms of career growth and ROI. मैं वही आंसर किया यार, ROI की भी तुम टेंशन मत लो, अभी तुम कोई भी वी स्कूल ज्वाइन करोगे अपार्ट फ्रॉम FMS 15 लाख से लेके 25 लाख का तो खर्चा है, उसके ऊपर तुम कितनी ऐश करोगे बॉम्बे आके वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है. तो या सो ROI का फिक्र मत करो. As I said, so ROI should be calculated not 1 year, in a couple of years, and the degree you're getting and the exposure you're getting. So what you're doing is Deloitte could be great, but later on life is worth it. क्यों भाई आनंद, do you agree? And ये तो गोवा से भी ज्वाइन कर रहा है. Absolutely sir. और मैं तो प्लेसकॉम वाला था, तो people who are questioning Narsi Monji's ROI, भाई, there are people who are working for you to get the best companies out there, so don't worry. जाओ, chill करो, मेहनत करो, and you know things will happen, and you know things will fall into place. Don't worry. बिल्कुल बिल्कुल. और NM question. Great. Keep asking questions. और NM versus other colleges, बस थोड़ा सा बॉम्बे प्रेफरेंस दे देना. बॉम्बे की लाइफ ही अलग है यार. हाँ, तो जिन लोगों ने ऐसे, जिन लोगों ने शहर वाली लाइफ कभी नहीं देखी है, या कोई तुम में से tier 2 cities है, कोई tier 2, just type in the chat or unmute yourself. शहर नहीं देखा है कभी, कोई है ऐसा? विशाल है और कोई? तो बॉम्बे आओ भाई, बॉम्बे का अलग ही. कोल्हापुर ग्रेट, रायगढ़, जमशेदपुर. ओके गुड. सो वो मैसूर सर वेटलिस्ट का मूवमेंट क्या रहता है? टफ क्वेश्चन. ये आई थिंक तुम्हारे सीनियर्स आंसर करेंगे. अनीशा, क्या था लास्ट ईयर वेटलिस्ट का मूवमेंट? So waitlist essentially doesn't really move. Keep as good as no expectation from the waitlist, since you can see 1500 tak is already converted, right? So last 2 years since the time it has been moving waitlist till 1500, there is no movement, but you can keep your fingers crossed. You never know, things can change every year. People who are also asking ki ek mein mila hai to will the other, like for example you have converted HR and waitlisted for core, they're all independent. Even if you've applied for analytics, which results will come out in March, it's independent. So you can accept or reject this particular admission. It will not impact any other waitlist movement or statements. But the ones who are waitlisted in core, na samajh ke chalo, unfortunately move nahi hoga. सर एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है क्या? फीस का थोड़ा लेट हो गया तो कैसा कर सकते हैं, मतलब होगा या नहीं? हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट है. जो पहले भाग के जाके बिल्डिंग को टच करेगा एनएम की, उसको मिलेगा. और करे यार भाई, लोन वोन सब हो जाता है. इट्स ओनली हाउ बैडली यू वांट टू डू इट राइट नाउ. ट्रस्ट मी, SBI से लेके सब कुछ से लेके I've seen people getting things in 1 week's time. So it's not a tough thing, पर थोड़ा भागना पड़ेगा तुम्हें भी फटफट से करना पड़ेगा. पर लोन मिल जाता है, वो टेंशन मत लो. Sir, can you brief a bit about the HR program? Like, how does it stand in comparison to the other colleges which are giving HR tests, XLRI, MDI, and all those? And matlab uska bhi to same fees hai, and the package is relatively lower than that of core. So uska bhi matlab ROI is getting, like, I'm a bit confused what to do right now. फिर ROI एक तो नारसी मुंजी आ रहे हो, ऊपर से बॉम्बे आ रहे हो, फिर ROI ये FMS का कॉल होता है तो ROI वहां तुम डिस्कस करते नहीं, यहाँ तुम डिस्कस करोगे. बट एनी व्हिच वेज ठीक है. आई लेट आवर प्लेसकॉम गाय टॉक अबाउट इट. आनंद बता भाई, तू प्लेसकॉमर है, क्या सीन है भाई? So see यार, first things first, if you have to have a look at the HR program on a whole, it stands in, you know, on the same line as along with XLRI. Our HR program is, you know, affiliated with SHRM, Society for Human Resource Management, etc. जो कि इंडिया में ही there are only 2 colleges that have, you know, that have this. Coming to placements again यार, during, you know, see, HR में होते हैं 80 बच्चे max to max, ठीक है. 80 में से पहले 2 हफ्ते में प्लेस हो जाएंगे. Then the question is about the 20, you know, because then, you know, HR placements take time, but you know, there are a lot of companies that come for HR, and placements are not difficult unless you decide to make it difficult. So there have been instances, you know, where people have underperformed, etc. But मैं अगर last year का मैं placement report वगैरह देखूं, I could see a lot more companies that have come for HR roles. So
आई एम अ डायनासोर नाउ कंपेयर्ड टू यू गाइज, मतलब मैं तो 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ. But see, in terms of, you have to see it in two ways. First, in terms of learning, ठीक है, learning के terms में the course at Narsi Munji is similar to what happens in XLRI etc. So no need to worry there. कल को ऐसा नहीं है कि people will see a Narsi Munji MBA HR degree on your CV and say नहीं यार तुम्हें तो नहीं लेंगे, ठीक है. Second, with respect to placements, again 4 years back, again the top 60 people among the 80 would get placed ASAP, ठीक है. बाकी 20 का fight होता था, but again people would it was also because people were underperforming etc. तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है यार. It's so again, in terms of learning, your ROI is sorted. In terms of placements, your ROI is sorted, ठीक है. Thank you. Excuse me, sir. If we compare XIMP का HR versus NMIMS का HR, then sir, what in terms of fees would be more valuable, I guess, because a normal means student who is an average might have both the calls from XIMP and NM, but not from XLRI. So, if you could answer this question. You're asking me or somebody else? Means everyone. It's open to everyone. Anisha ma'am, I think it's for you. I don't know about XIMB. Personally, see, if you ask me, the kind of opportunities that you will get at NMIMS HR will be more as compared to your XIMB HR. With exposure, with the fees, see, it's not just about the final placement or total fees which you're paying for 2 years, right? It's also a lot of competitions, lot of corporate projects. Future options are way more higher here. So I think that is a better option for you to choose. Still, you want to take a decision, I would suggest speak to at least 2 students of the current batch of all the calls that you have. Anyone who's making any comparisons, don't go by anybody's biased opinion. Speak to 2 students from the current batch. ठीक है, चलो देखिए. हाँ, अभी एक हाँ बिल्कुल तेरा क्वेश्चन का आंसर करूंगा. एक रिक्वेस्ट है, अभी सारी की सारी कन्वर्सेशन शुड बी ऑन NMIMS लाइव एक्सेट्रा. वीजा वीज कंपैरिजन ये वो देखो, अभी दूसरी चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है. अभी तुम्हारे हाथ में नार्सी मुंजी है, उसको सेलिब्रेट करो भाई, है ना. अभी यहाँ जाना है वहां जाना है, वो अपन करेंगे. इसका वर्सेस आज NM पर पर्सपेक्टिव ले, जिनका कोर है, जिनका ओनली नार्सी मुंजी है, उनका थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए. तुम्हारे पास तो कईयों के बाद अहमदाबाद कॉल भी और तुम यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है. तो एक रिक्वेस्ट है, so that everyone can benefit out of it. हाँ भाई, क्वेश्चन पूछिए. सर, नार्सी मुंजी मीडियम क्यों नहीं मेंशन करता है अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट में? हाँ भाई, प्लेस कॉमर नार्सी मुंजी मीडियम क्यों नहीं करता है? अनंत, व्हाट इज दिस मैन? शोभा भाई मैम को फोन करूं मैं? If you have a look at other placement reports also, that is something that is followed, ठीक है. अभी there are 10 or 20 ways to look at data, and there are 10 or 20 ways to fudge data. I think mean represents it gives an accurate picture. हम क्या करते हैं? If you have a look at the placement report also, we tell you the different zones, top 20 students किसमें है, top 50 किसमें है, top 100 किसमें है. So it gives a fair idea. अब median पकड़ के again people will end up getting confused. And placement reports are not just for students, it's also circulated among companies as well. So क्या होता है? We have to make the placement report also in a way that is acceptable to companies and read by companies. So hence we do it that way. I'm just thinking about MBA HR. I'm just writing down 2 people. One is working at TAS and the other one is working at PNG. Both of them have passed out 2 years back. So you can reach out to them on LinkedIn. I'm just messaging them also, saying they're gonna get a lot of invites. And I'll tell you one of them, he's got married to NM core की बंदी. तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि HR वालों को भाव नहीं मिलता है. तो ये मोटिवेशन दे रहा सर आप इन लोग को. बिल्कुल. तो क्वेश्चन जिनको आते रहते हैं कि क्या करेंगे. हाँ, लिटरली हाँ. And both of them are working in the same company right now. कल आपने ग्राइंड किया था SPJain में इंटरव्यू में. क्या किया था मैंने? सर कल आपने ग्राइंड किया था मॉक इंटरव्यू में क्लास में. हाँ, अरे गीतांशु जी आए. हाँ, सॉरी यार, थोड़ा ऐसे ही. नहीं, मैं सर ये पूछना चाह रहा था, I already have 2.5 year work, so अगर 1 साल और ड्रॉप करूं, if SPJain नहीं हुआ,
हो जाएगा, बट एनएम छोड़ना चाहिए क्या उसके लिए? टफ क्वेश्चन, पहले एसपीजन का वेट कर ले, मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। इतना तुझे कल ग्रिल किया था, अभी जाके फाड़ के क्या पहले एसपीजन का, फिर देखते हैं बाद में। फाड़ तो देंगे, बट एक प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट रहना पड़ता है। मुझे सुननी नहीं, गंदगी सुननी नहीं मेरे को। कल 45 मिनट इसका इंटरव्यू लिया, आ जाके ये बात कर, पहले तो रिजल्ट आने दे और पहले तो यू गिव योर परफॉर्मेंस फर्स्ट, डोंट टॉक अबाउट बीइंग अ लूजर। ग्रेट, हाँ, बाकी जनता। So I have one question. I know that you were saying that vis-a-vis comparison पे question अभी नहीं करना, but I just want to ask question regarding NMIMS versus SIBM Pune, only because SIBM Pune results are coming out on 21st, and NMIMS payment deadline is also 21st. So in that case, I mean, like we should have this talk right now, so that because 21st को time नहीं होगा, and it obviously only makes sense to make a payment for one college. So where should we pay, SIBM Pune or NMIMS? Very tough call. I'll give you my unbiased opinion. यहाँ पे दो तुम्हारे सीनियर एनएम के बैठे हुए हैं, ये तो नारसी मोहन जी बोलेंगे, मुझे पक्का पता है। क्यों भाई? हाँ भाई, अनंत। So that's an obvious thing, but as an like if this confirm if I'm audible right now, so in my opinion, तो सर बीच पे अब इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट ये तो I also chose NMIMS. I had all SIMB converts IIT वगैरह. I chose NMIMS. I had my own reasons. क्योंकि मुंबई है, exposure मिलेगा offline corporate projects. It's easier to get in Mumbai rather than in Pune, obviously. So I have my own reasons, Mumbai का exposure and everything. But that being said, again, NMIMS and SIBM both are top tier colleges. Like, you know, more or less comparable. 19-20 का difference है. So I would just suggest what Sir said. Talk to people in SIBM. What do you think? And again, there's a bit of uncertainty as well. You are assuming that your SIBM convert to the. What if you do not have that chance? Yeah. So just adding one more. So adding one more aspect to this, guys, when you're comparing, both of them are good. The difference comes is in the fees that you pay. That's the only difference. If you look at the kind of packages which are coming, it's the average is almost the same, but the fees of NMIMS is higher. If you don't mind paying that much fees for your overall learning, then definitely go for NMIMS, because when you look at, apart from placements, all the other aspects, SIBM Pune say NMIMS is definitely better. Your pure learning, your competition, it's an entire batch. Yes, batch size is high, but that batch size higher makes you more competitive. There is no reservation. So smart, competitive, spirit wale people ke saath mein you're studying. So that's going to be another advantage for you. Even I left SIBM Pune, being from Mumbai, still wanted to continue in Mumbai because of all the aspects, your seniors connect, your corporate connect, the faculties, case study competitions, everything. The only difference point will be your fees. For NMIMS, आपको पैसे थोड़े ज़्यादा भरने पड़ेंगे. But if you can recover that by doing competitions and projects, nothing like it. I have a question. एक मिनट एक और बंदे का फीडबैक। अनंत, क्या सीन है NM वर्सेस SIBM, तेरा क्या थॉट है? यार क्या है, see, I'll tell you, in fact, I don't believe there's too much of a difference in any college. In fact, अगर आप NM के top 20% में निकले ना, you are comparable to IIM folk as well. ठीक है, the company that I work in, मैंने और IIM अहमदाबाद वाले ने साथ में internship किया था, both of us got a PPO. It's not a big deal. ठीक है, see, both of them are good colleges. Again, you might have a preference basis, fees, etc. But you know, again, see, crowd देखो दोनों जगह पे अच्छा रहेगा. Exposure, you know, with, you know, COVID going out again, you know, Narsi Munji, last year, I think they completed their placements in 7 days, जो कभी नहीं हुआ है, which shows the number of companies also that had come on campus, you know, to take students. In fact, if I take SIBM Pune, we finished our placements before them also. Yeah. ठीक है, so मतलब see यार, eventually obviously it depends on, you know, what you feel financially is suitable to you. Both are good colleges. ऐसा नहीं है कि एक जगह पे पैसे भर के you'll be making a mistake. ठीक है, बस जय माता दी बोल के कर लो कुछ.
That's very good. I have a question, sir. एक मिनट यार 21 तारीख डेडलाइन है, मैं अपने 2% देता हूँ, बाकी मर्जी तुम्हारी होनी चाहिए, ठीक। I've trained both people, like इसके बार हमारे कुछ 30-40 लोग NM छोड़ के SIBM जाते हैं और 30-40 लोग SIBM छोड़ के NM जाते हैं, और अराउंड 100-200 लोग NM छोड़ के NMIMS जाते हैं और 100-200 लोग NMIMS छोड़ के NM आते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा खुद का कॉल है, कोई सही जवाब नहीं है, बट 2 थिंग्स, वन इज बॉम्बे फैक्ट्री इज रियली अमेजिंग, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। दूसरी चीज NM का प्लस पॉइंट, NM इज गांव, बहुत बड़ा गांव है यहाँ पे, और बहुत ही बड़ा गांव है, और वो बड़े गांव से डरने का नहीं है, बट यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर नंबर ऑफ पीपल, मोर कंपटीशन, एंड if you ask me, I find NM guys just slightly little bit more competitive when they come out because of the place com being little bit more, Anant, if I can say, ridiculous, or place com being little bit more strict, that's the right word, and because they're managing the herd as well. But at the same time, SIBM, beautiful campus, Shanti Purvak environment, chota batch size, life is on the go, life is good. Fees thoda kam, fees thoda zyada, पर मुझे तो कंपटीशन पसंद है, और तुम NM वर्सेस SMB का सामने सामने बंदा करोगे तो NM का बंदा थोड़ा ज्यादा आउटस्पोकन भी हो सकता है, और थोड़ा, एज अनीशा मैम सेड, थोड़ा कोटा नहीं है यहाँ पे। I mean, with due respect to guys who've got quota, मतलब it's strictly on merit, समझा? और imagine like 500 people fighting for this, तो इसलिए, yeah, but choice अपना खुद का लो, talk to 4-5 people and get the vibe of the school, and once you make a decision, then no looking back. I know you can take the refund, etc. You take your own call. Hami, next question. Is there a disadvantage in NM for not being a residential college? Because most of the B schools are residential. This is, I guess, only B school which doesn't have a in-house campus. Like I sort of entered with this. I thought I'd be like, I basically paid, and I'm from Delhi, so I was just taken up by surprise. Oh, you're getting this, but for the land. सृष्टि, Yes, sir. हाँ, क्या बोल, हाँ, बोलो, कैमरा ऑन करो यार, ऐसे कैसे? एक सेकंड, हाँ, बताओ। हाँ, नहीं, मैं कह रही थी, I'm from Delhi, so I went in with this mindset that वहाँ पे extensive, like the hotel that's costing 4K here is at 18K there. So the cost of living just took me out कि भाई यहाँ तो land rates हद से ज़्यादा आए हैं। बॉम्बे यार, come on, बॉलीवुड आ रहे हो तुम, अभी तुम NM, तो बॉलीवुड वाली सैलरी नहीं है ना अभी। वही की सब होएगा, अभी तुम अमिताभ बच्चन के घर से 1 किलोमीटर दूर रह रहे हो, कुछ तो होगा यार, शाहरुख खान तो सड़कों में मिलेगा। Jokes about, yes, हाँ, इसका सवाल क्या था? About residential program, since NM is not residential, is there a disadvantage there? Oh, tough question again. हाँ, रेजिडेंशियल में मजा तो आ रहा है यार, ठीक है। सो अब मेरे पास जमनाल बजाज भी था, और IIM कोईकोड भी था, और SPJain भी था, तो मैंने जमनाल बजाज इसलिए रिजेक्ट कर दिया था कि भाई वो सिर्फ एक बिल्डिंग में है टाइप, और एक रेजिडेंशियल में फीलिंग तो आती है, वहीं रहते हो, वहीं खाते हो, वहीं सोते हो, सब कुछ वहीं करते हो, एंड ग्रुप वर्क इकट्ठा कर सकते हो, फीलिंग तो अलग आती है। बट आई थिंक NM का भी हॉस्टल है, एंड यू गाइस कैन स्टे आउटसाइड, व्हेन यू स्टेइंग आउटसाइड, यू स्टेइंग विद 4 पीपल टुगेदर। तो रेजिडेंशियल में भी तुम कमरे में तो 4 ही लोग होंगे, 3 लोग होंगे, लाइक SPJain में हमारे 3 लोग होते थे, तो वहां पे भी तुम हॉस्टल में अपना खुद का PG रह रहे तो 3 ही लोग होंगे, बट इट्स ऑल ओनली अबाउट द कम्यूट। हमारा भी फ्रॉम हॉस्टल टू कम्यूट यूज्ड टू बी लाइक 5 minutes, like in the morning, or like 3 minutes by bike, or maybe 10 minutes if you walk slow. NM का भी अगर तुम्हारा हॉस्टल सामने है तो रिक्शा विल बी लाइक मिनिमम 3 minutes 4 minutes। तो रेजिडेंशियल और इसमें ज्यादा फर्क नहीं रहा, क्योंकि रूममेट 4 या 5 होंगे, समझ रहे हैं? only the commute thing, and you're not staying in the campus as well, क्योंकि रात को वैसे भी मतलब 11 बजे दुकानें मोस्टली बंद हो जाती हैं। बट एक है कि प्लेसमेंट के टाइम पे रेजिडेंशियल कैंपस में कुछ थोड़ा इजी हो जाता है, कुछ रह गया, कोट रह गया, कोट पे कुछ लग गया, वो भागना थोड़ा, नोटबुक रह गई, तो वो थोड़ा सा इजी, राइट? व्हाट्स योर टेक? हाँ भाई, सीनियर्स Anisha and Anant, Addy. So I think, yes, definitely residential campus has its own merits, like sir has also mentioned to you, but you can make the most out of even a non-residential campus. People who are coming from out of Mumbai, you are going to be staying in the hostel, which is like really close by. It's going to be 15 or 20 minutes at max. Okay. I have been staying at home for 2 years, traveling 1.5 hours one way to make sure you reach to campus, and still made the most of it.
they minus placed, won international competitions, won tons of medals in sports, everything. So it's up to you to make the most of any college, wherever you're going, the amount of efforts you can put in doing multitasking, collaborating with your peers, learning, that it depends irrespective of whether you stay there or you stay 2 hours away. So that's not going to be the factor to make a decision. I think you just need to push yourselves harder in every college you go to be in the top 10% of the batch. That's the focus. But again coming back, notch higher residential campus. मैं NIT सूरत का residential campus में रहा हूँ, उसके बाद भी SPJain was residential campus. एक मतलब बहुत ही subjective चीज है, शायद आपको help हो इसका. You become little bit lazy. मतलब I become little bit lazy after staying in residential campus. But I hate traveling. I'm in Bombay though. Now I stay in Powai, so I don't feel like going out of Powai. तो आप वो ये उसी के frog रह जाते हो. But एक बंदा जो daily travel करता है तो he is much little bit more open. When I look at my friends, I don't feel like going out. Like घर पे ही आ जाओ जिसको party करना है type. तो ये overall तुम्हारा nature खराब होगा. मतलब. Sir, I have a question. Sir, I had a question. I had a question. Sir, My question was that, like last year, before the this year, our last year average was 23. Before that, the average was somewhere around 18 to 19. So, do you think like this should likely increase, because it seems like like इतना बड़ा jump था because of COVID and everything. So, आपको लग रहा है कि आपका ROI कहीं ना कहीं, if you're investing 25 plus cost of living, so you're sort of getting that return. But in a big batch size, is this like, if you understand, right? वो पहले 18 था, फिर ये तो वैसा रहा कि वो थोड़ा पलट जाए, especially given you're paying 25 already and with that cost of living. No, I can vouch for that. It is not going to fall this year. In fact, all of us, a lot of my friends have got into top tier companies at good, great packages. In fact, better than what was there last year. So definitely, it's not going to fall. That is something that I can assure. Baki, Anand is my friend. Include HR as well. Sorry. Does that Yeah, it is. include HR as well? Yeah, HR. HR placement report is separate. The 23, Yeah, which HR is there. placements are pretty low, I guess. Like, Not pretty low, but question. it was good. Yeah, we don't. एक मिनट, जो भी बात कर रहा है, please कैमरा ऑन रखिए. लास्ट रिमाइंडर है, नहीं तो मत बात करिए. हाँ, हमें दिखता नहीं कौन बात कर रहा है और किसको रिप्लाई करना है. Yeah, Shishti or answer, don't worry about that. एक B-school को maintain करना होता है. I can vouch for NMIMS की placement की एक मैडम इनकी शोभा पाई. She YouTube पे live भी चल रहा है. She is fantabulous. Anand, would you agree? She is that one person, who's taking care of placements, and she'll never, she is the benchmark. She's been here for what, 15-20 years now, and हर साल उन्होंने वो growth लाके दिया है. If आप जो बोल रहे हो ना, specific jump also, Shrishti, if and Aditya can back me up. तो क्या है ना, every year there are people with specific skill sets that are coming into MBA and Narsi Munji. क्या है, जिन्होंने 4 साल जिन्होंने product management या कुछ किया है, right? तो क्या होता है ना, for them we've been able to open newer roles as well. I remember until my batch, मतलब मेरे batch के पहले the highest package would be around 30-32 lakhs. मेरे बैच में यार मैंने गूगल का खोला था और 50 lakhs. तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट्स एंटायरली यार. तुम ये मत देखो कि यार 18 से 24 हो गया, 24 से 18 भी हो सकता है. कंपनी आके सब्जी नहीं खरीदने आई है कि हमसे 2 ही किलो खरीदेंगे. इट्स एंटायरली बेसिस योर स्किल सेट्स. ठीक है, एंड इफ यू आर दैट गुड, कंपनीज विल ओपन रोल्स एज वेल. डोंट वरी. Sir, I have a question. Like, हमारा offer letter में there we need to pay certain amount, like 12 lakh rupees. But हम तो like as a student we'll take the entire. If we want to take the entire loan, so what's the entire loan, like what we should take? Like they have not mentioned the entire fee structure either in the offer letter or in the admission form. Plus we have to include our travel expenses and food expenses as well. So अगर मुझे पूरा loan अगर if I want to apply, so whether I'll get the entire loan and how much should I take
the amount I should take for loan. Surely. Anisha, you want to reply to this? Yeah. So Aditya, firstly, fill in your acceptance form. You will get the entire details of your payment and your fee structure. Still, you need more information about the same. Drop in an email to NMIMS. They will give you the details about the breakup. And you also have a lot of associated banks which are related to NMIMS. उनके पास आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज है अबाउट द होल लोन प्रोसेस. वो 4 दिन में 500 बच्चों का अप्रूव करते हैं, राइट? सो आप डायरेक्टली उनके पास जाइए विद योर ऑफर लेटर. दे विल हैव ऑल द डिटेल्स. The only option you will have is you can choose whether you want to apply for first year loan or you want to apply for both the years loan right now. That's your personal choice. You can get both of them. A lot of students choose to take only 1 year right now and decide for next year later on. It's your decision. So you can make a choice about that, discuss it at home, and then take a call onto it. Yes, I would like to continue. Should we say for a hostel? Hostel or? So hostel or the flat in Villepa, in near Nasimunji. Flat. Depend करता है पैसे कितने तेरे पास. So first flat. So the flat. NMIMS is my best call yet. भाई रुको भाई, एक टाइम पे एक बंदा बोलेगा हाँ भाई फ्लैट लेना चाहिए. most of people recommend flat. आदित्य just one line बोल रहा हूँ फ्लैट के बाहर. एडी बोल रहा है फ्लैट. फ्लैट के हॉस्टल Listen, better है या फिर like flat? 99. Oh, guys, let me say, don't keep an eye. So at least 95% people from my batch stay in a flat. I think that itself says ki flat ya hostel, baki it's up to you. Both, you can live in both, you can still do networking in both. But yes, 95% of the second year current stays in a flat. So, so there are flats nearby, like near the college. Yes, Ville Parle, Juhu Circle, you'll get in Juhu Tara Road. बहुत जगह यार आओ search करो. Go to. So, guys, quickly one line to have it, end your this discussion. You will soon get an email coming in from your student council, which will give you help on also where and how to find flatmates. You all have a WhatsApp group which is made of all the converts. Use that platform to network and understand who are the people with whom you would love to stay and hang out with, right? So asking here, how much will the flats cost? How much is the kilometers distance? I think let's utilize this time to learn more than being rental brokers for all of us. So let's move further ahead into more meaningful discussions, guys. Sir, I have a question to mention that this is my best call yet. I mean, the other calls that I have are almost laughable, so I'm not going to mention them. I think the query that I have is similar to a lot of other people. So I've converted both HR and the core program. I have an inclination towards HR, but because I've also converted the core program, I've started thinking, I basically have marketing and HR as the two domains where I would want to pursue. So I'm a little confused about core and HR. Looking at the placements, of course, it's a no-brainer that you would go for a core. But I just wanted to know if there's somebody who has an inclination towards HR and the course is comparable to a lot of other good colleges. Should I go for the HR program or should I go for the core? Or is there anyone who can throw light on this dilemma that I think a few other people also have? मैं फटाफट आंसर करूंगा वन लाइन के अंदर. अभी सब जवाब वन लाइन के होंगे. मैंने ना गलती से YouTube लाइव चला दिया और 123 बेचारे अगले साल के बच्चे सुनने के लिए तो बैठे. कुछ ज्ञान तुम्हारा ठीक है तो थोड़ा ज्ञान भी दे देना उनको. और 12 बज गए और 130 लोग बैठे हैं. भाई स्ट्रीम को लाइक ठोक दो तब तक तुम आके, और इनको मैं फोर्स कर दो, तुम्हें कुछ मोटिवेट करके जाएंगे. अच्छा वन लाइन भाई देख, मैं तेरे को बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ. गूगल, फेसबुक, GE, मैक्स कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक. HR एक ऐसा फील्ड है until unless you're doing it for XLRI या NMHR also, ऐसा बुरा नहीं है. XLRI HR जो कि मतलब मशहूर है, मतलब हर टॉप CXO लेवल पे तेरे को कहीं ना कहीं पे एक्सेल का HR मिल जाएगा. वो डेफिनेटली विद ड्यू रिस्पेक्ट they're really amazing. But अगर तुम नॉर्मल चीजें पढ़ते हो, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR in big companies, after 2-3 years you can actually move to the HR role. समझा? In fact, you will become a better person because you will know how the finance functions working, how the business functions working, and you can move to the HR later on in life as well. समझा? और अगर तू सिर्फ HR से स्टक करेगा तो HR पे स्टक हो जाएगा. उसके बाद मूव करना तेरे को मुश्किल रहेगा. I'm not demeaning HR here, but I'm just telling you, तू सारे काम कर सकते हैं, पर ऐसी कंपनी में जाना which allow you to shift functions later on
and there are many good companies who do that. ठीक है पुलक? Sir, I had a question. So everyone says that NM Mumbai is famous for finance, but my inclination is towards marketing. So would you say that it's a good decision just to opt for finance because everyone says so, या marketing लेना चाहिए because that's my inclination? कोई कॉलेज इंडिया में फेमस नहीं होता है मार्केटिंग या फाइनेंस, ठीक है? पहली बात क्लियर कर, ठीक है? वो एक परसेप्शन बन जाता है कि भाई यहाँ पे ये आ रहा है, वहाँ पे ये आ रहा है. 2 कंपनी ऊपर नीचे हो सकती है, 2 आई बैंक ज्यादा आ सकते हैं, जेपी मॉर्गन आ गई, नमूरा आ गई, हल्ला गुल्ला हो जाता है कि भाई ये है. बट वहां पे साइड पे पीएनजी, एचयूएल, रैकेट बेनकाइजर, पिडिलाइट, ये वीआईपी, ये सब स्टैंडर्ड है जो कि आते ही आते हैं. सो वैसा कुछ है नहीं है, एंड इट्स जस्ट अ परसेप्शन और पीपल गेट इट. और पैकेज में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो फिक्र मत कर. और डिपेंड करता है और तेरे पास कॉल्स कौन सी है. फ्यू कंपनीज व्हिच आर लाइक जी में ही जाना है. जी नारसी मुंजी में आती है, बहुत बढ़िया. मैं खुद हायर करके आ चुका हूँ नारसी मुंजी से, तो वो अलग बात है. बट ऐसा कुछ है नहीं किसका फाइनेंस अच्छा और उसका मार्केटिंग अच्छा. Hi, sir, I have one question. Sir, I have a question. So basically, I have 2.5 years of work ex in marketing and sales, but I'm converted MBHR. So should I join it or not? I have only one call. It is MBHR. HR करना है, पसंद है? So internships करी है मैंने HR में, ऐसा कोई issue नहीं है. But the thing is that after completing my MB, मैंने course भी देखा, it's almost for trimester 1-2 is similar, and उसके बाद थोड़ा सा differences है. But the thing is, I just want to know कि HR के MB के बाद मैं कौन-कौन से फील्ड में या कौन से डोमेन में जा सकता हूँ, या मैं अपना डोमेन वापस से मार्केटिंग में चेंज कर सकता हूँ and फिर प्लेसमेंट से ऐसा करेंगे. HR करने के बाद तो HR ही रहेगा. मैंने हार्डली देखा ऐसा लोग शिफ्ट करते हुए HR फंक्शन से मार्केटिंग में आ गए, एंड पीपल स्टार्ट लविंग दैट एज वेल. तो खुद को पूछो यार, देखो HR पसंद है क्योंकि मतलब मुझे भी HR में जाना था, मुझे किसी ने एडवाइस किया, एंड थैंक्स टू दैट पर्सन हू एवर एडवाइस मी कि जनरल MBA करो, क्योंकि पता नहीं होता है योर एज की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. और 2.5 साल एक्सपीरियंस है, तो सोच एक बार अपना स्पीक टू सम पीपल हु डू HR स्टफ एज वेल. नहीं, मैंने बात करी सर, मैंने 2-3 सीनियर से भी बात करी, तो ही सेड कि सेल्स HR में जा सकते हैं और कंसल्टेंसी में जा सकते हैं. इफ यू वांट टू प्योरली HR चीज में नहीं जाना है तो देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब अपार्ट फ्रॉम द HR वाली चीज भी NM से, मतलब प्लेसमेंट में भी. So हाँ that भैया, is पर सेल्स HR में तू क्या करेगा? तू विल बी वर्किंग फॉर माइकल पेज, बट तेरा जॉब होगा कि टू सेल द HR प्रोडक्ट ऑफ माइकल पेज. So you'll go to companies like Google, GE, etc. and tell them, sir, आप हमसे मास रिक्रूटिंग का सिस्टम ले लो, बट तू रहेगा वहीं पे. समझ रहा है? तो वो देख लो, मतलब वो एक डोमेन फिक्स हो जाती है. बट आई हैव सीन सम पीपल मूविंग इट आउट, बट ऑप्शंस कम रहती है. सी देखो, with due respect to HR, it's a great field for sure. It's very good support function for the entire organization. HR are getting very powerful as well. But at the same time, the number of people, the number of companies, the number of HR are also low, because एक HR 40 लोगों को मैनेज करता है. 40 कौन? 40 मार्केटिंग के लोग. उतना थोड़ा कंपनीज थोड़ा कम होती है, बस ये थोड़ी दिक्कत. ठीक है. Sir, I have a question. Sir, is it possible for a fresher to be in top 50 or top 100 in terms of placements in NM? 100% श्योर. दो तरह के लोग होते हैं फ्रेशर. एक जो कि टॉप पहले दिन की नौकरी लगती है, अनीशा एंड एडी एंड प्लेसमेंट गाय आनंद, यू कैन ऐड ऑन दिस. यहाँ तो डे 0 निकल जाते हैं फ्रेशर, खाली रिव्यू में होता है भाई, पता नहीं लोगों को पसंद आ जाते हैं और उनकी नौकरी लग जाती है. और कुछ जनता होती है जो कि स्ट्रगल करती है टुवर्ड्स द एंड, और फ्रेशर भी होते हैं, वर्किश भी होते हैं, पर फ्रेशर दिख के आते हैं और थोड़े इनफेमस हो जाते हैं, भाई फ्रेशर है, इसकी तो एंड में नौकरी लगी. बट फ्रेशर्स गेट डे 0 प्लेसमेंट्स एज वेल until or unless companies come and tell you कि भाई मुझे 2 साल एक्सपीरियंस वाली जनता ही चाहिए. राइट? आनंद, you are a place comer yourself, तू बता भाई. Sir, one more question. हाँ, I'll come to that. आंसर तो सुन ले भाई पहले का. That's true, sir. Whatever you said was absolutely correct. ठीक है, unless a company actually comes with a mindset कि नहीं यार हमें 2 साल वाले चाहिए, which is more for let's say consulting or let's say some of those senior positions and senior ये freshers निकलते हैं भाई. finance के देखो तो यार Goldman Sachs में सबसे पहले ही दिन आधे लोग निकल जाएंगे. then उसके बाद when FMCG companies will come, freshers वहाँ पे भी निकलते हैं. there is no limitation if you're a fresher. The ball is on your court as soon as you enter. उसके बाद ये नहीं है कि आप fresher हो इसीलिए placement नहीं होगी.
कौन फ्रेश है जिस टाइम जिस टाइम फ्रेश माल कौन है भाई जो फ्रेश है फ्रेश सर कैश का प्रॉब्लम होता है क्या? Can I add a point to this? Yeah, Eddie, go ahead. Coffee fresh. Yeah. So the thing is, yeah, the fresher. I know a lot of my fresher friends, like Amika's one fresher friend, who got placed in the first week, and I know a lot of people with work ex who did not get placed, and vice versa. तुम fresher हो work ex उससे फर्क नहीं पड़ता है. कंपनी आएगी. There would be some companies like sales companies, maybe XYZ companies that prefer fresh. There would be companies coming for leadership role prefer people with work ex. All depends. ऐसा कुछ नहीं कि तेरे को नहीं लगेगी 3 साल की वर्क को नहीं लगेगी सबकी जॉब लगेगी. All depends on how well you are prepared. तुम्हें अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, you should have that talent, that communication skills, that technical knowledge to convert it. That's it. सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सबको like I have 2.5 years work ex. I got a lot of opportunity, and there are freshers that I know मेरे ही CAT group पे who got a lot of opportunities. So you will get a lot of opportunities whether you like definitely in NMIMS prepare well to convert that. That's it. ठीक है, good. Next question. Sir, I have a question regarding that. Like, I come from a very weird category. Like, I have done my chemistry undergrad. So, NM is my this convert, and I'm expecting a call from IIFT. So, should I just drop this year because I just graduated? I'm just 21, and should I drop this year and then try again for CAT? So, I just wanted to get this. So even I had that question that I am also 20, so matlab MBA HR and MBA core either. So and the fees is also high. So I have time. Like so, my best call is NM, and I guess I will get a call from IIFT because like उसमें अच्छा हुआ 99% है. So drop करूँ या ना करूँ? That's the question. अगर convert नहीं होना. मैं celebrate करने के लिए लाया हूँ तुम सारा drop की बातें कर रहे हो. क्या कर? ठीक है. Oh, tough question. I'll give my 2 cents. बाकी अपना खुद करो, ठीक है. पहली बात तो to take a decision whether to drop or not is a very difficult decision. दिल पे हाथ रखो and college का vibe check करो. You belong. It's like getting married, ठीक है. And I want you to get married only once. I don't want you to do remarriage. Second MBA करूँगा बाद में अभी के लिए कर लेता हूँ. I don't want to do that, ठीक है. तो long answer short कि पहले तो vibe check करो. You belong it there. फिर थोड़ा सा जिंदगी में औकात के ऊपर खेलना चाहिए. मैं आपको अपनी स्टोरी बता दूं. I went to SPJain बॉम्बे. SPJain बॉम्बे था, कोई कोड था, जमनाल बजाज था, MD गुड़गांव था, और क्या कहते IFT था, एंड IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, वो सारे के सारे टिपिकल IIT नार्थी मुझे एस मेजाडी सब कुछ था. तो बेस्ट कॉल मेरा कोई कोड JB और SC मेजाडी था. तो मैंने बड़ा ही टफ कॉल लिया कि भाई मैं बॉम्बे में रहूंगा क्योंकि once you start saying in Bombay you don't like Delhi you don't like us. So coming back, तो या वो बोल रहे थे ना सृष्टि, I don't like. मैं वही बोल रही हूँ, तभी मेरा दिल नहीं कर रहा. एक बार बॉम्बे आ जाओ तुम, दिल्ली वाले बदल जाएंगे यहाँ पे. हाँ, कमिंग बैक, तो ड्रॉप करना चाहिए यार. 20 साल की उम्र है तो पक्का रिस्क लो यार. अब नहीं रिस्क लोगे तो कब लोगे भाई? 20 साल की उम्र है तो एक बार कैट जिंदगी में पूरा फुल थ्रॉटल देना चाहिए मुझे लगता है. क्योंकि क्या है कि अंदर से आवाज ना रह जाए यार मैं तो SPJain का हूँ, ये तो IIM अहमदाबाद का है, मैं तो नारसी मोजी का हूँ, ये वो. ऐसा डाउन द लाइन 3-4 साल बाद कोई पूछता नहीं है. आई एम इन द कोचिंग फ्रेटर्निटी, तो लोग मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो खुद साला SPJain का है, बच्चों को IIM अहमदाबाद कैसे पहुंचाएगा. हाँ सीरियसली, मतलब फिर मैं कोचिंग फ्रेटर्निटी, मैं किसी ने कोरा पे भी आंसर लिखा है. तो मैं क्या बताऊं कि यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं हम. नेवरदलेस, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यार, तू देखो विच ब्रांड यू कैन एसोसिएट इट विद, बट औकात के ऊपर खेल यार थोड़ा सा. जो तेरे को लगता है कि ये तो जो आराम से मिल गया उससे तो शादी नहीं करनी ना, समझ रहे ना, जो आराम से. One question. हाँ बोलो. Sir, basically my 10 CGPA is just 5 CGPA. 10th में मेरा 5 CGPA, 12th में 76% है, and graduation में 75% है. तो the thing is कि placement के time पे कुछ criterias वगैरह affect करेंगे placement को? Some companies may ask for academic. SPJain बॉम्बे में हम लोग तो वो दिखाते नहीं है. 10th 12th के नंबर, ग्रेड के नंबर सब निकाल देते हैं अपन लोग, CV के ऊपर ही नहीं है. बट डिपेंड करता है सम कंपनीज के ऊपर. अनंत वुड टेल अस. अनंत कुछ टॉप 5-6 कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपने 10th 12th के नंबर भी पूछ लेती हैं. बाकी आई थिंक पर्टिकुलरली फॉर HR 70 मेरे को लगता नहीं फर्क पड़ेगा. और प्रेस कॉमर से होते हैं, लेटेस्ट प्रेस कॉमर है, मैं बुढ़ापे वाला हूँ. हाँ करेक्ट. तो यार again few companies have that criteria जहाँ पे 10th and 12th mark sheets and scores do get considered.
बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार. इफ यू आर अ गुड कैंडिडेट, you know, you will get pushed no matter what. ठीक है. As in, you know, we also know how to pitch to people, and you know how to get CVs across. So क्या है, you need to show that you are that good of a person and that, you know, your marks do not matter पहले. So you know, the college will help you out. Don't worry on it. ठीक है. You need to, you know, build your reputation and prove your mettle there. That's all. Sure, thank you. Just one thing for all of you guys asking the same doubts with respect to your acads or your freshers. See, the criteria for every company will change year on year. You don't know what are they looking for. That's not in your hand. Your focus should be that I am preparing my best shot. Whichever is the first interview that I sit, I have to convert that. As simple as that. You can't change your past acads and everything. So don't worry about it. Now just focus on progressing ahead. एक सारी फ्रेशर जनता को एक एडवाइस है भाई. पहली बात तो आई एम नॉट सेलिंग यू समथिंग, बट एक कोर्स है एंगेज 7x. चुप करके वो कोर्स कर लेना. 5-7 हजार का इन्वेस्टमेंट है, वो कर लेना. फ्रेशर जनता, हाँ, यू विल थैंक मी लेटर ऑन. एंगेज 7x एकेडमी 15 दिन लगाओ और वो करो. वो अमिका को भी करवाया हमने. अमिका इज प्लेस्ड इन डाबर. इसकी आईडी की दोस्त है और पीपीओ लग गया बंदी का. सॉरी, व्हिच कोर्स? एंगेज 7x. जस्ट गूगल आउट एंगेज 7x एकेडमी. 15 दिन अभी तुम्हारे पास है. कॉलेज कन्वर्ट हो चुके, वेले बैठे हो, दिन का 1-1 घंटा लगाओ और you'll have 5 different certification and 5 different things to talk about. Blockchain, strategic marketing, digital marketing. एक यूएस से बंदा एनालिटिक्स पढ़ाता है. तो एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन, ये दो तुम्हारे हाई फंडू पॉइंट्स हैं. ये तुम्हारे एसआईपी में हेल्प होंगे. नमन ने ऑलरेडी कर दिया. Can you please repeat it? I will send you. Anisha can just send the link on the group. Check करें. Sure. 15 दिन every day it's going to be good. Sure, I'll do that. Okay. अब तुम्हारे दुख दर्द अगर खत्म हो गए हो तो हम थोड़ी खुशियां मना लें. Sir, Sir, one more question, please. दुख दर्द वाला नहीं होना चाहिए. No, sir. Sir, wanted to know more about the entrepreneurship and startup culture in India. There is no culture of NM में entrepreneurship or startup. Okay. On a lighter note, yaar, there is a culture of that, but it's very little in all the top B schools. Whatever they say is not up to the mark. Yeah, and they are picking up right now. IIM A and IIM B are picking up right now. But पंगा है कि हमारे इंडियन बी स्कूल में फीस के बोझ के तले तुम इतना बंद जाओगे ना, जो मुझे बुरा लगता है. अभी बजट में, मतलब हाउ मच एवर आई लव मोदी जी, बट आई हेटेड हिम बिकॉज IIMs को 600 करोड़ का बजट दिया है. आई थिंक वो बॉम्बे BMC सैनिटरी क्लीनिंग का बजट 600 करोड़ से ज्यादा होगा. 20 IIM को 600 करोड़ का. तो मतलब वो तुम्हारे पे ट्रांसफर होने वाला बजट. यू हैव टू पे द फीस राइट नाउ. सो इसलिए तुम वो बोझ के तले अगले 3 साल तुम बुढ़ा जाओगे MBA करने के बाद. Until or unless पैसे पड़े हुए अंदर दबा दबा के, तो फिर फटाफट लोन लेने की जरूरत नहीं है, तो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है. There are competitions like Shark Tank, Finding Neo, etc. I'm one of the judges in one of the competitions. वो करते रहते हैं हम लोग, बट फिर भी वो धंधा बनाने का इंक्यूबेशन सिस्टम हार्डकोर अभी भी इंडियन बी स्कूल्स के अंदर थोड़ा कम है. समय लगेगा थोड़ा. थैंक यू. सर, मुझे पूछना था कि स्टूडेंट एक्सचेंज का क्या रहता है? हाँ, तो हर कॉलेज के बोलो 600 में से कितने स्टूडेंट्स जा पाते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर बताएगा एडी. एडी का है. एडी लेटेस्ट आंसर बताएगा, मैं पुराना आंसर बताऊंगा. So I think with COVID, everything was put on a pause, but the student exchange program is gradually resuming. Like from my batch, I know I think 5-6 students last semester to गए थे, 5th-6th semester में जाते हैं. So again, because of COVID, a lot of COVID, because traveling and everything was bad. So but then the college opened to forms and people who are interested to apply, do apply. So again, that option is there, student exchange, and if you're able to fulfill the criteria, you can go there. That option is there. But again, abhi COVID mein the college is planning to have a session with your voice is cracking. You cracking up. But I understood. तो भाई कोविड टाइम था, इतने ज्यादा लोग गए नहीं है, बट बहुत बड़ा भयंकर कल्चर नहीं है कि बॉय पूरा बैच उठ के जा रहा है स्टूडेंट एक्सचेंज में. पर मौका मिलेगा तो पक्का जाना. स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जाना ही जाना है. वो तुम्हारा 3 मंथ का पेड हॉलीडे है और यहाँ पे लोग डराएंगे और प्लेसमेंट में इफेक्ट होगा, ये होगा. अरे भाई, जो तुम लर्निंग लोगे बहुत अमेजिंग है. जागेश गोलवाला इस कैट 100% है. वो IIM अहमदाबाद से HEC पेरिस गया है.
उसने तो अपना सेमेस्टर 2 कर लिया, मैं तो साल के लिए जा रहा हूँ। तो बेस्ट इज अपना जाते ही कॉलेज में इंटर्नशिप शुरू होगा तुम्हारा, किसी भी बी स्कूल जा रहे हो, इंटर्नशिप अच्छे से करो और इंटर्नशिप में पीपीओ ले लो। पीपीओ लेते ही फटाफट पीपीओ आ जाता है 1 ईयर के एंड के अंदर। उसके बाद अगर 1 ईयर का मिलता है एक्सटेंशन तो जाओ भाई बाहर निकलो। इसका ही इज इन एचईसी पेरिस फॉर 1 ईयर। तो उसने 1 साल आईआईएम में किया, अभी वो बाहर निकल गया। वो पक्का करना है, दैट विल गिव यू विंग्स, यू रियली एंजॉय दैट टाइम। चलिए भाई, ओके, इंटरेस्ट ऑफ 150 पीपल हैव जॉइंड इन एंड चलो भाई अभी उधर उधर सवाल नहीं करेंगे। भाई कैमरा ऑन करिए। एक लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल है ही नहीं अभी, इग्नोर। ठीक है, हाँ तो अभी थोड़ा सा ज्ञान दो भाई। 150 लोग तुम्हारे को वेट करे, देखो 140 रह गए भाई। स्ट्रीम को लाइक ठोकिए, थोड़ा ज्ञान दो, एक एक लाइन यार, मोटिवेट करो। तुम रोल मॉडल हो, तुम्हारे दुख दर्द बंद हो गए हो कि भाई क्या पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है। एनीवन एंड विद योर कैट पर्सनल एज वेल, वन लाइन, एनीबॉडी हु वांट्स टू गो फर्स्ट। जल्दी फटाफट स्पीड से, हाँ बोलो। Hello sir, I'm Tushar Sarkar. My CAT percentile is 99.80 and NMAT. And अगर इस टाइम में बोलना रहेगा सर, दिन का 1 घंटा 2 घंटा जैसे चालू करें, ये टाइम तक चालू कर दिया तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। बेसिकली दैट्स एवरीथिंग। अगर मेहनत किया कुछ भी हुआ, हर दिन करना है तो करना ही। आंधी आ गया तो हर कोई नहीं करते तभी। दैट्स इट। That's great. I hope CATKing was helpful in your journey. Good. संडे को आपको मिला भी तक। हाँ संडे को तो वही था। अच्छा अच्छा अच्छा, I remember. अच्छा, good good. ठीक है, great. Who's next? फटाफट थोड़ा ज्ञान दो भाई। भाई 140 people are watching you right now. Well, my name is Ashish Seni. I got NMAT 255. For that, I literally thank Anisha ma'am because I started my NMAT preparation with her. And I would just say that follow one person, don't follow too many guides. Anisha ma'am is someone who will guide you through NMAT. And after that, Rahul sir ki motivation will make you crack interviews as well. Especially Adi sir is someone whom I still remember 2 days before I requested him कि sir भले आप 11 बजे free हो रहे हो, मेरा interview आपसे ही लेना क्योंकि मैंने stress interview देना है. And he make sure he said like, you know, keep a smile, तेरी smile गायब हो रही है, ये मत कर, and don't move your chair. आज तक मतलब I make sure that I don't move my chair like when I'm sitting. And like they will teach you like, you know, don't lean right left but lean forward, and that's how the life works. I think that's all from my side. All the best. Proud of you man, proud of you. Great. हाँ भाई, anyone, any message? हाँ भाई, I women just in the have house. one message. आगे कौन है? हाँ सृष्टि, you hate us, you hate Bombay ना? तू तो रहने ही दे। नहीं ये मत करो, ऐसे मत करो, गाली पड़ जाएगी मेरे को। ठीक है, बॉम्बे का चलता है। But the one thing I would say is कि पहले अपने कैट पर्सनल बताइए, एनमैट जो अच्छा है जो बताना चाहती, फिर अपना मैसेज को दुनिया को। I don't think cat is 8 but maybe yeah. एनमैट क्या है? Am I? I think my internet is went out. Your interest back. ठीक है, जब तक वो दोबारा आती है. Who's next? I just want to mention that it's a great thing that we have not just one management exam, we have many. And मेरा CAT का इतना बुरा गया है कि I can't even reveal my marks. But I just want to tell you that if one of the management exam goes, do not get bogged down. Just prepare for the others and do not skip on NMAT and SNAP at all, because these are, for example, NMAT is adaptive and I was surprised myself when I saw the score. So you never know how well you're going to do in the other exam. Give as many as possible. And मेरा CAT का स्कोर पता चलेगा तो मेरे को निकाल देंगे NMAT से। बता दो दे लोगों को यार, लोगों को तो मोटिवेशन। My NMAT score was 244 and that's the best score that I got. Super man, super. Okay. I have a suggestion to. Sir, my CAT percentile was 93.33 and my XAT was 96.44. So one thing which I would say is have a strategy for every exam which you are giving and fill the forms of the college. I see many people who are like literally not filling up the forms thinking that they will not make it. They do not have a good profile. So do not reject yourself. Let the college reject you and have a strategy for each and every exam. The strategy for CAT will not work for NMAT or SNAP. So the best thing is to just keep giving mocks. That's all from my side. क्या तेरे CAT और that क्या है? Says that 96.44, CAT 93.33 and NMAT 239. I have a suggestion to everyone who is preparing for any management exam. Know why you want to do MBA. It will not only give you motivation for preparing for any competitive exam,
but also it will help you in your interviews. I scored 241 in NMAT, but still my merit rank was 7 because I nailed my PI. Because I knew what I was speaking, I knew why I am doing what I am doing. So actually, the panelists were really impressed. I could feel it in their faces when they were talking to me. So why if you know why you are doing MBA, that actually helps a lot. Superb. Great, yaar, great. You guys are all motivating for me as well. And thank you so much for coming back. और ये तो stud बंदा है, तो topper आदमी. Thanks 7 मारा तूने यार. Great. Sir, just one last question because I might not meet you after this meeting. So इसलिए एक question था. So NMAT is adaptive and GMAT is also adaptive. So what do you think? Like इस साल हम जैसे CAT दिया है, NMAT दिया है, so we are in a touch with the entire thing. No, so should I give a try at GMAT as well? Like मेरा MBA HR है, so that's an opportunity cost that I have to take. So what's your take? Like NMAT. Give GMAT. It's an easy exam. तो यही पूछ रहा था. Sir, if I can add, because I have given both GMAT and NMAT. अरे अभिनव पहले स्कोर बता अपना. GMAT में I got 700 and NMAT में 247. तो GMAT and NMAT में there is a overlap of course because दोनों adaptive होते हैं, so it's easy to like adapt. And जो critical thinking and verbal वाला part है, that is also overlapping. So after giving GMAT for NMAT में मेरे को ज़्यादा preparation नहीं करनी लगी. तो vice versa भी true होगा mostly. So try GMAT and 700 आ गए तो you can apply to good college. MDI गुड़गांव से जाऊंगी, फिर मैं दिल्ली में रहूंगी. बिल्कुल, तो GMAT दे सकते हो यार, बिल्कुल सही बोला. ओवरलैप तो है, but GMAT level GMAT का है. My 2 cents to everyone, since we're talking to the other students also online right now. चलो अब तुम्हारी तो तैयारी खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो रहा है. अगर तो CAT मेन फोकस है तो GMAT पहले दे दिया करो. GMAT दे दो, उससे CAT की तैयारी हो जाती है. और अगर GMAT पहला फोकस है तो पहले CAT दे दिया करो, बिकॉज मैथ्स की तैयारी हो जाती है. GMAT का वर्बल इज लाइक फाड़ वर्बल. अब ये 700 ऐसे अभिनव प्यार से बोल रहा है, पर अभिनव 700 लगाने की पढ़ाई करी है तूने, है ना? एंड यू आर अ वेल रेड पर्सन, बुक्स पढ़ रहा है तू बचपन से. हाँ, तो थोड़ा वर्बली खेलना पड़ेगा 700 लाने. बिल्कुल. ठीक है, गुड. ठीक है, ओके. एनी मोर ज्ञान फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स? My one thing that I have is give. थोड़ा CATKing के बारे में बता दो भाई. CATKing भी कुछ हेल्प की, एक आधी लाइन हमारे बारे में बोल दो. सर आप लोग PI एलुमनाई से कराते हो आप, बहुत बढ़िया बात है. ठीक है, हाँ बताओ क्या बात है. CATKing CDPI course is very it's very nice. You have the dockets where you specially get the interview experiences of all the colleges, IIM, non-IIM. So that's there, and the dossiers about the marketing HR. Those are very specific and very detailed. So that's what what will attract you when you take that course, and that's the USP of CATKing. Yes, definitely. Actually, if you go to see, मैंने तो बस वही किया, वो PI का जो वीडियोस था और वो डॉजियर जी करके ही मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ है. CAT तो मेरा वैसे भी ठुक गया था, but I actually lost hope after my CAT. But then I just thought, let me fight till the end. And finally, we have the chance to go to NMIMS now. Really like to thank the CATKing family that way. Thanks, man. क्या स्कोर क्या है तेरा? NMAT स्कोर क्या है? Sir, 246 आया sir. Oh भाई, superb. Sir, I want to add something. Sir, my CAT score is 96 and NMAT is 254. So, sir, what I want to like to say is that कि sir मेरे साथ बहुत लोगों ने entrance exam दिए थे, but बहुत सारे लोग motivation lose करके वहीं पे quit कर देते हैं. So I want to say कि motivation मत lose करो. और sir मेरे को तो आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा motivation मिलती है हर month. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने अराउंड उन लोगों को सराउंड करो जो आपको भी मोटिवेट करे और आपको पुल करे रादर देन नीचे खींचे. तो वो सबसे ज्यादा पुश करेगा आपको आगे लेके जाने में. रादर देन आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर मोटिवेशन लूज कर दोगे बीच में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा. तो थैंक यू वेरी मच सर एंड CATKing फैमिली, प्योरली बिकॉज सर आप लोगों ने बहुत मोटिवेट किया एंड PI कोर्स बहुत अच्छा था. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम, थैंक यू. I was also part of your CDPI course. हाँ. Sir, my score was 233 in NMAT and मेरी अंडर ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में थी और 2 years का गैप भी था. तो इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना. पता है कैसे बोल रहा है वो? टीवी में ऐड आती है ना, मैं पहले बहुत ही वो थोड़ी सी आवाज वो हो रही है, अब क्या आ रही है?
क्या था NMAT तेरा 233 and converted it. Wow. 233 था सर और मेरा कन्वर्ट हो गया है और मैंने भाई आपके जो CDPI कोर्स के अंदर जो इंटरव्यू के आंसर्स एक्सप्लेन कर रखे हैं और डॉजियर्स ने हेल्प करी मेरे को आंसर्स बनाने में, तो अच्छा रहा सर एक्सपीरियंस कैटकिंग का। तो आई वुड रिकमेंड कि स्टूडेंट्स जो बैचलर्स के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, BA के भी, चाहे कोई सी फील्ड के हो, ट्राई कर सकते हैं, होपफुली हो जाता है। क्या बात है, super congrats. And the most useful part were those answers which were framed by you, Ankita ma'am, and Hitesh, Heath sir. Simran and Heath, yeah, interview. Even those interview answers, and at last which notes which you made, those were the most helpful ones I felt. तुम्हें चीटिंग करवाई है मैंने पूछ के कि भाई IMT गाजियाबाद में ये चल रहा है, सुबह ये चल रहा है, शाम को ये चल रहा है, जो लोग अभी इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो, you know what's happening on the GK Yeah, side. sir, you frequently said don't take anything from these, like write your own strengths and weaknesses, but obviously we took some part from that and it worked. Chalo, great. All right, last parting thoughts. Anybody want to say anything for the people who are preparing for next year? सर एक चीज बोलना है सर मॉक्स के ऊपर। सर 99.8 परसेंटाइल आया सर सिर्फ मॉक्स के वजह से, एंड वो मॉक्स, और आपने बोला था मिस्टेक्स का बुक बनाओ। सर मेरे पास इतना मोटा मिस्टेक्स का बुक है जिसमें 60 मॉक्स का मिस्टेक्स लिखा हुआ है। तो वो मॉक्स लेके वो मिस्टेक इज समथिंग दैट कैन मेक योर लाइफ, दैट इज समथिंग दैट कैन मेक और ब्रेक, लिटरली दैट इज द थिंग दैट मैटर्ड द मोस्ट इन माय प्रिपरेशन। तो वो करो, मॉक्स लो, मॉक्स तो दो ही, बिना मॉक्स से कुछ नहीं होगा। Great. And the thing that I want to add, sorry to interrupt, NMIMS का interview revolved around the SOPs, and if you want a repository of SOPs for the best people who've converted NMIMS, I don't think you'll find any other place better than CAT. Because if you are trying to frame your own SOP and the interview revolves around the SOP, you will take bits and you will take inspiration from the SOPs that NMIMS, the CATKing family has. So if you are aiming at NMIMS, do not skip on joining the CDPI course and checking out the SOPs because they really help. Also, if you check out SOPs online, you will find Indianized nahi hai wo. It has to be very localized to the environment that you're in. So I think this is the best repository that there is. So, true, actually, SOPs. They actually helped us frame our own SOP, and उससे interview सारा का सारा drive हो पाया है. So वो SOP का repository was actually very good. And the only thing I would like to add is, I mean, people have already mentioned it, the thing about not losing hope. Because this time, I think most of us had to go through this thing कि CAT was massive distraction, and उसके बाद फिर सारी hope खत्म हो गई थी. And that was the same thing with me as well. And except NMAT, maybe I was scoring 234. So it was just 2 marks above the cutoffs. And I was not really hopeful, but फिर सोचा कि नहीं ठीक है, CDPI में enroll किया, and then thought कि नहीं चलो, we should take an attempt, and ultimately clear हुआ, and I cleared both core as well as HR. And now actually I am having a dilemma जो I wanted to ask if I should go for core or HR, because I wanted to go for HR, but now that I have converted both and people are opting, more people actually say that core is more in demand. So I'm really in a dilemma कि कौन सा लेना चाहिए. तो ये मैं आप लोगों से पूछना भी चाहता था, सर से, मैम से, कि कहाँ जाना चाहिए. बिकॉज मैं बस अपने बारे ये बताऊंगा कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, और जिसको कहते हैं एम्पैथाइजिंग एंड स्टफ, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रहा है में. तो ये बस मैं एडवाइस लेना चाह रहा था कि विच वन शुड आई गो फॉर. ठीक है, तो इसका 2 सेंस है, कोर जाओ भाई, कोर थोड़ा बेटर है, और HR के सपने तुम कोर से भी जी सकते हो, पर HR वाले सपने कोर वाले सपने HR से नहीं जी सकते हो, समझा? वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. और थोड़ा फर्स्ट बेबी ट्रीटमेंट थोड़ा सा तो है, HR इज लाइक सेकंड बेबी फॉर श्योर. ठीक है, वो थोड़ा सा तो है. तो कोर जाओ. लॉट ऑफ पीपल डू द अदर वे अराउंड एज वेल, इज माय रिकमेंडेशन. ठीक है, चलिए भैया, वन लास्ट I wanted to add one thing. It's can I add, sir? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अपना CAT परसेंटाइल या NMAT जो भी. My CAT percentile is 97.01 and NMAT is 247 and my merit rank is 14. So regarding merit rank is 14 that we are talking about is 14 in MD4 and HR1. So regarding work that we are talking about, it's like I have an experience 3.5 years. So for previous like 2 or 3 years, I'm giving CAT. It's like 82, 92, 97. But this year also I got 97, but my VRC
the cutoff is 69. I think I got 69, and the cutoff is minimum 80 for both colleges and IIMs, you can say. So still I'm not qualified for IIMs, but I can say one thing, that don't give up hope and do as much mocks you can give. Like not only take one mock or from one institute, take multiple mocks. It will increase your score for sure, and do not feel so. And there are many people who are like, I'm from engineering background, I don't like that stuff very much. So I have one more reason to pursue MBA. So there are many people out there I know in engineering background, they don't like the technical stuff and they wanted to move out. So MBA is a really like a good option for you. So keep trying on and you will get better. Just give as much marks you can and just rectify your mistakes so you don't make them again in the like afterwards. And yes, JDPI goes for CATKing. It's really good. And the SOPs, there are a lot of SOPs, 200 plus, and there are a lot of experience that you can get. And from them, they are very relatable to you as well, you can say, and then you can modify them as well. So I think that's really helpful. All the JDPI courses, SOPs, PI, and the Friday sessions, marketing sessions, everything. So that's really good course. I think it's really helped me for sure. I'm glad, man. I'm glad. The Chalo, best part is they review the SOPs. It's not just we write our own SOPs. They review it. That's the best part. So I'd like to add one more thing. I'd like to thank all the faculty of CATKing for always motivating us. I couldn't get into NMIMS for my BBA, but 3 years down the line, abhi MBA kar raha hu. Feels great. And NMIMS is my best call and a dream college for me. I'd like to thank all of you. And yeah, मेरे mocks में 200 पार नहीं होते थे, but I scored a 250 in my final NMAT. Feels great and hoping for the best for all of you as well. Super, man. Super, Dhruv. Super. Congrats, man. Congrats. I wanted to add one thing about the interview. बिल्कुल असली खुशी ये लोग मनाते हैं, है ना? पहले नहीं हो पाया, अभी हो पाया. Great. हाँ भाई बताइए. So man, go ahead. Last one. Yes, sir. So I wanted to add कि if you think you have messed up in your past, like about academics or anything, yeah, especially in SOPs, because me personally, I messed up so bad in the SOP. I did not even expect a convert from NMIMS because 5 minutes before going into the interview hall, I read my SOP and there I had written that I would be honored to join MBA from your esteemed Institute of IIM Shillong, because I had copy pasted it. And I had no expectations that I'll crack the interview. But in those 5 minutes, I got my head straight. एक चीज मेरे दिमाग में आई कि अभी तुम अच्छे करोगे तो राहुल सर बोलते कि पुराने पाप तुम्हारे धुल जाएंगे. Kept my head high, was confident, went there, cracked the interview, and it went great. I converted. So ऐसा कुछ हो रहा है तो don't lose confidence and don't point it out yourself. Let them point things out. क्योंकि लर्निंग है, नकल मत मारो, नकल मारो तो थोड़ी अच्छे से. इधर मेरे शिलोंग के SOP थे, but नकल वही तो नकल करते हैं. Yes. Super. All right, boys and girls, thank you so much for joining in. You guys are awesome. Stay good. It's the first celebration. पहला वाला important होता है यार. धीरे-धीरे तुम्हारा कहीं का अहमदाबाद आएगा, बैंगलोर आएगा, लखनऊ आएगा. वो तो बहुत-बहुत बड़ी चीज है. And Ritam, you want to say something? Go ahead. और बड़े पहला बड़ा call है यार, you know. And many people have this only call. उनका celebration अलग ही होता है. Yeah, Ritam, you want to say something? सर कुछ नहीं सर, वही थैंक यू बोलने वाला था. फिर मैं सोचा का एंड ही कर देते हैं, बहुत समय ले रहे हो. तो मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी. कैमरा ऑन करके बोलो जो भी बोल रहे हो. यस सर, मेरा ना 232 पे कन्वर्ट हुआ है और मेरा फर्स्ट मॉक पीआई बहुत ही गंदा था और मेरा सेकंड वाज गुड. तो मेरा 232 पे कन्वर्ट हो सकता है तो किसी का भी कन्वर्ट हो सकता है. ये चीज है. गुड. सुपर प्राउड ऑफ यू यार. ये इनकी स्माइल ही अलग है. जिनके 260 270 पे कन्वर्ट है उनकी स्माइलिंग ना कम. सुपर प्राउड यार. और बाय द वे एक ना भगवान का एक आशीर्वाद है, जो आयुषी हमारे जो लास्ट मिनट स्टैंडिंग होते हैं ना, आज से 3-4 साल पहले एनएम का कट ऑफ 208 हुआ करता था. 208, 209, 210. फिर थोड़ा पेपर में लेवल अप हुआ है. और these guys get the best placement ever who were the last one to enter inside. तो वो हमारा कैटकिंग का ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखना. हाँ श्योर सर. Okay, great. Thank you guys. Have a good night. Take care. मजा आ गया तुमसे बात करके और मिलते रहेंगे, अभी तो सेलिब्रेशन करते रहेंगे. Once you guys make your final calls, attend all the sessions also. ठीक है? SIBM का भी होगा, वो भी हम करेंगे. तो हर एक से सीखना. तुम्हारी मिनी एम भी अभी करवा के भेजेंगे. अभी तुम्हें काफी एक्सपीरियंस आ जाएगा. और IIM ABC भी जो कन्वर्ट होंगे will make you meet the seniors. Watch the life inside as well. And thank you बोलो एडी को and आनंद को and नीशा मैम को. ये तुम्हारे सीनियर्स हैं. ठीक है भाई? Done. And people on the YouTube family, work hard. अगली बार तुम भी आना यहाँ पे. हाँ, यहाँ सेशन में आके बातें करेंगे. ठीक है?
Have a good night, guys. Take care. Bye bye. Thank you. Thank you. Thanks everyone. All the best. Thank you. Yes, sir. Thank you.